अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आपको इंजेक्शन के बारे में जो है सजेस्ट करेंगे कि इंजेक्शन जो है वो कैसे मैक्सिला और मैंडिबल में इंजेक्ट करते हैं। इंटीरियर जो है वो बताया गया है, बक्कल बताया गया है, जॉ, गेट्स, उसके बाद जो है वो ये 6 कॉजेज़ हैं इसकी। इसको कैसे हमने इंजेक्ट करना है। ये सिर्फ नर्व्स का इशू होता है, थोड़ा सा जो है वो प्रेशर होता है नर्व्स में। तो इंजेक्शन हमने एग्जैक्टली मैक्सिला और मैंडिबल के मिड में बोन के अंदर लगाना है। उसको कहते हैं रेट्रोमोलर एरिया। इसकी रेंज जो है 25 जो है वो गेज होती है। तो इसको जो है वो एग्जैक्टली हमने 10 o'clock के रेंज में इंजेक्ट करना है। ये 8 o'clock टुवर्ड्स लेफ़्ट साइड और 10 o'clock टुवर्ड्स राइट साइड। सिर्फ हाइट ऑफ इंजेक्शन, इंटीरियर जो है इसकी पोजीशन, पोस्टीरियर की पोजीशन, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन की, और ये जो है वो आपको इंडिकेट किया गया है कि किस रेंज में हमने इसको इंजेक्ट करना है। इसको बोलते हैं रेट्रोमोलर एरिया, सुपीरियर पोस्टीरियर। तो इंजेक्शन की जो रेंज है वो आपको सजेस्ट की गई है। ये इसका एग्जैक्टली डायरेक्शन है। लेफ़्ट अपने मोलर से 5 और 4 के दरमियान से इसकी पोजीशन रखनी है और एग्जैक्टली बोन की तरफ ये इंडिकेट किया गया टुवर्ड्स ये जो है वो इंडिकेट किया गया एग्जैक्टली यही पोजीशन है इसकी इंजेक्शन लगाने की, और एग्जैक्टली हमने बोन को टच करना है। ये इसकी रेंज भी जो आपको सजेस्ट की गई है। तो आपने 25 to 20 mm जो है वो इंजेक्शन इंजेक्ट करना है टुवर्ड्स बोन की तरफ। इसकी टोटल जो है रेंज ये आपको सजेस्ट की गई है 1.5 और 1.8 ml एग्जैक्टली नर्व के अंदर बकल। ये आपको येलो नर्व नज़र आ रही है इम्पेक्शन की बैक साइड पे, रेट्रोमोलर एरिया। यहाँ पे हमने इसको इंजेक्ट करना है। इसकी रेंज जो है गेज 25 है और ये इसका डायरेक्शन है टुवर्ड्स लेफ़्ट 4-5 जो है मोलर्स उसके बिल्कुल स्ट्रेट। और ये जब हम इंजेक्शन जो है वो लगाते हैं, इसका 3 ml जो है वो रेट्रोमोलर एरिया की तरफ लगाना है। जॉ जो है वो गेट्स का जो है बताया गया आपको, ये नर्व है, ये डायरेक्शन है। जब इंजेक्शन हम एग्जैक्टली लगाते हैं तो इसका जो है ये आपको सारा वेरीफाई किया गया कि इसका सुन इस साइड से लेकर यहाँ तक अरेंज होता है। ये इसके डायरेक्शन है। ये 25 गेज जो है लॉन्ग इसकी रेंज है। तो अगर हम राइट साइड पे आएँ तो राइट साइड पे जो इंजेक्शन का डायरेक्शन है वो 10 o'clock है। लेफ़्ट साइड पे 8 o'clock था और राइट साइड पे 10 o'clock। ये आपको 8 o'clock है और लेफ़्ट साइड पे 10 o'clock। ये जो है वो आपको इसके बारे में बताया गया। इसकी रेंज भी वही सेम है। ये अपर पोर्शन में चले गए, अपर पोर्शन में स्ट्रेट टुवर्ड जो इम्पेक्शन अपर जो है वो जॉ, वहाँ पे ये इंजेक्ट करना है। तो इसकी जो रेंज आपके सामने जो है सजेस्ट की गई है कि इसकी जो है रेंज एग्जैक्टली एवरेज डेप्थ जो है वो 25 mm है। 1.8 ml हमने इंजेक्ट करना है और एग्जैक्टली बोन के अंदर, ताकि टोटली जो है एनेस्थाइज हो जाए। ये आपने इंजेक्शन के बाद 2 मिनट इसको मुंह को खोल के रखना है। ये इसकी रेंज आपको सारी सजेस्ट की गई।
ये इंडिकेट है कि जब बोन के अंदर एग्जैक्टली नर्व के अंदर इंजेक्शन लगता है तो इसका ये रेंज होती है, यहाँ तक ये सुन होता है। सुपीरियर, मिड राइट साइड, लेफ्ट साइड। तो ये लोकली जो है इंजेक्शन, पहले जर्नल इंजेक्शन था, अब लोकल इंजेक्शन 8 o'clock की तरफ हमने इंजेक्ट करना है। ये वेरीफाई किया गया कि एग्जैक्टली ये पॉइंट है जहाँ पे आपने इंजेक्ट करना है। ये इसकी रेंज है। अपर जो है मैंडिबल की रेंज, ये आपको इंजेक्ट जो है 25 mm जो है इंजेक्शन इंजेक्ट करना है, 1.5 और 1.8 ml। ये जो है वेरीफाई किया गया कि इसकी जो है रेंज फ्रंट में और सुपीरियर में ये दोनों डिफरेंस जो है होते हैं। ये आपको रेंज बताई गई कि यहाँ तक एनेस्थाइज होता है 25 गेज शॉट। ये लोकल जो है इंटीरियर में, तो यहाँ पे जो है इंजेक्शन सारा जो है वेरीफाई किया गया, इंजेक्शन एग्जैक्टली जो है वो नर्व के अंदर इंजेक्ट हो। ये आपको ये वेरीफाई किया गया एग्जैक्टली नर्व के अंदर। अगर लेफ़्ट राइट जो है वो इंजेक्ट हो जाए तो ये एनेस्थाइज नहीं होगा, सुन नहीं होगा। तो ये इसकी पोजीशन है एग्जैक्टली। तो इसको जब आपने इंजेक्शन लगाना है तो इसको प्रेस करके रखना है ताकि नर्व्स की तरफ ना चला जाए मसला। ये ज़हन में रखिएगा। अब आपको इंग्लिश में ये सारा सजेस्ट करेंगे कि ये कैसे सारा काम होता है। इसकी टेक्निक We will now इंग्लिश। discuss the following techniques which provide anesthesia to the mandibular teeth and their supporting soft and hard tissues. Inferior alveolar nerve block, buccal nerve block, the Gaugates mandibular nerve block, the Vazirani-Akinosi mandibular nerve block, the incisive nerve block, also known as the mental nerve block. The inferior alveolar nerve block provides anesthesia to the pulps of the 8 mandibular teeth in that quadrant. The buccal soft tissues and bone anterior to the mental foramen, the anterior 2/3 of the tongue and the floor of the mouth, and the lingual soft tissues and periosteum. A 25 gauge long needle is recommended. For a left inferior alveolar nerve block, the right-handed operator should sit at the 10 o'clock position facing in the same direction as the patient. For the right inferior alveolar nerve block, the right-handed operator should sit at the 8 o'clock position facing the patient. There are 3 criteria for determining the correct insertion site for the needle. The first is the height, the second is the anterior-posterior position, and the third is the depth of penetration. A finger is placed on the lingual aspect of the ramus and pulled anteriorly until the carotenoid notch is palpated. The carotenoid notch is the greatest concavity on the anterior border of the ramus. The barrel of the syringe is placed in the corner of the mouth on the opposite side. The needle tip touches the most posterior aspect of the pterygomandibular raphe. The needle tip is then moved half the distance toward the carotenoid notch and then half the distance back toward the raphe. This locates the injection site, which is 3/4 of the distance from the carotenoid notch to the raphe. The needle is then inserted and advanced slowly until bone is contacted. The average depth of penetration is between 20 and 25 millimeters, which is 2/3 to 3/4 the length of a long dental needle. Once bone is contacted, aspiration is performed twice, and if negative, 1.5 to 1.8 mL of local anesthetic is administered slowly. The buccal nerve block provides anesthesia to the soft tissue and periosteum on the buccal aspect of the mandibular molars. The injection is given immediately following the inferior alveolar nerve block. A 25 gauge long needle is recommended. The needle is withdrawn, the syringe is repositioned, and the needle reinserted in a mucobuccal fold
distal to the last mandibular molar. 0.3 mL of anesthetic is administered. The Gaugate's mandibular block provides pulpal anesthesia to the mandibular teeth, the buccal soft tissue and bone, the anterior 2/3 of the tongue and the floor of the oral cavity, the lingual soft tissue and periosteum, as well as the skin of the zygoma, the posterior portion of the cheek, and the temporal regions. A 25 gauge long needle is recommended. For the left Gaugate's mandibular nerve block, the right-handed operator should sit in a 10 o'clock position facing in the same direction as the patient. For a right Gaugate's mandibular nerve block, the right-handed operator should sit in the 8 o'clock position facing the patient. The carotenoid notch is palpated. The barrel of the syringe is placed in the corner of the mouth on the opposite side, and the needle tip is placed just below the mesiolingual cusp of the maxillary second molar. And then the needle tip is moved just distal to the second molar. This locates the insertion site for the Gaugate's injection. The needle is now inserted until bone is contacted. The average depth of penetration in a Gaugate's injection is approximately 25 millimeters. After negative aspiration, 1.8 mL of anesthetic is slowly administered. Following withdrawal of the syringe, the patient is asked to keep their mouth open for 2 minutes. The Vazirani-Akinosi closed-mouth mandibular nerve block provides anesthesia to the 8 mandibular teeth, the buccal soft tissue and bone anterior to the metal foramen, the anterior 2/3 of the tongue and the floor of the oral cavity, and the lingual soft tissues and periosteum. A 25 gauge long needle is recommended. For the right or left Vazirani-Akinosi nerve block, the right-handed operator should sit at the 8 o'clock position facing the patient. The needle is inserted into the soft tissue on the lingual aspect of the mandibular ramus, adjacent to the mucogingival junction of the last maxillary molar. With the bevel facing away from bone, the syringe is inserted 25 millimeters. Following negative aspiration, 1.5 to 1.8 mL of anesthetic is slowly injected and the syringe withdrawn. The incisive nerve block provides pulpal anesthesia to the 5 mandibular anterior teeth, the incisors, canine, and 2 premolars, the buccal soft tissue and bone anterior to the metal foramen, and the skin of the lower lip and the chin. A 27 gauge short needle is recommended. For the right or left incisive nerve block, the barrel of the syringe is kept below the patient's line of sight, and the needle inserted into the buccal fold adjacent to the first premolar, and then advanced until the needle tip lies outside the metal foramen. Following 2 negative aspirations, 1/3 of a cartridge of anesthetic is deposited over 20 seconds. The syringe is removed and pressure is applied extraorally or intraorally, forcing local anesthetic into the metal foramen, blocking the incisive nerve.